So the pricing is based on condition technique. That's what we all understood that day. Again, let's recap the section quickly. So the complete pricing information of or we can say the product pricing information is divided into four different components. One is base price, second one is discount or surcharge, third one is tax, and fourth one is freight. So these are the four components. Only these are the four components. And based on the requirement, we need to maintain the value of these various components. So these components in SAP SD is called as a condition type. Which are those? Let's say base price, then discount or surcharge, then we have freight, and then we have tax. So these are the four components. So these four components are, so these are the four pricing components: base price, discount, surcharge, freight, and tax. So these components in SAP SD is called as a condition type. These are what? These are the condition type. But how do we know that which condition type it is? Whether it is base price or discount or freight or tax or surcharge or what? How do we know? We all know that. Let's say if I ask you how can you differentiate between standard order and cash sales order, because both are the sales order. How can you differentiate? So your answer would be based on their sales document type. In case of a standard sales order, we are using OR, but if you are using cash sales, it will be CS. So these are the four components, but these four components are divided in condition type. So how can you differentiate? So for base price, we use only the PR00 always. So PR00 will be the condition type. For discount surcharge, we can have many condition type, as you understood in last session. Let's say if when it comes to discount, right? So we can have customer discount, we can have material discount, we have customer material discount. So we have so many discounts: K004, K005, K007, and others as well. Then freight KF00. Okay, so this is freight KF00, and finally we have tax, that is MWST. So these are the four components. So these four components are nothing but condition type. So based on the requirement, we need to maintain the value of these condition type. And the value of this condition type is called as a condition record. So this condition record is nothing but condition master data. That is the fourth master data of SAP SD. Now pricing in SAP SD is based on condition technique. As I updated in last session, that this is very, very important point in SAP SD, because there are so many objects in SAP SD which are based on condition technique. Which means what? If you remember these 9 steps, those other topics will also be very easy for all of you. Even I also sent you these 9 steps in an email. I don't know whether you have gone through or not, but these are the 9 steps. So if you understood these 9 steps, your pricing is done. Even other topic which we need to discuss, those all will also be very easily you all can remember. Why these are needed? Because many times in interview they ask question that can you explain me the configuration steps? Simple. Simply they will ask you, can you explain me the configuration steps? Right? I'm not about pricing, right? Because pricing is one of the most important components in SAP SD, and there are many questions. And there are some common questions which definitely you will get in the interview. Definitely. I can say out of 100%, in 99% interview, you will get those questions. So this is also one of the question. What is condition technique? Or can you explain us these steps of condition technique? So you should be a position to explain these 9 steps. So the first step of the condition technique is
put the fields you need into the field catalog. Now what is field catalog? Field catalog is nothing but you can say it is a combination. It is a table. I mean, not table. So let's say catalog. So if you go to any shop to purchase something, let's say you visited one shop to purchase some colors, right? So they will give you the catalog. They will tell you, sir, which color do you like? Correct. So in those catalog, all the details will be there. So what is our purpose of pricing? The purpose of pricing here is that if I am going to sell this product to you, system should charge this amount. If I am selling this product to others, system should charge this amount. And if we are selling this product to anyone, system should charge this amount. Right? So what are these? These are nothing but conditions. Similarly, I can say that if Vishal if Vishal belongs to so and so sales organization and if he is purchasing this product, system should charge this much of amount. Means what? Three conditions. Here we discussed. Sales organization, then customer, then material. So with these three combination, system will maintain the price. That if our customer is, so it means the condition is sales organization plus customer plus material. Right? So these are the three conditions. These are the three conditions. I mean, sorry, this is one of the condition with three different components, right? If this customer belongs to this sales organization and if he is purchasing this product, this material, system should charge this much of amount. One condition. Similarly, I can say if this customer if this customer is purchasing this material, system should charge this amount. So here, what is the condition? Condition here we gave that we given condition that if customer belongs to that particular sales organization, it means what? We need to confirm that if sales organization is 1,000 or whatever we have maintained, and then if customer is this material is this charge this much of amount. Means what? There might be a chance that if we are using other sales organization, system will not determine this price. System determines some other price. Similarly, here we are saying customer plus material. Means we are not giving condition of sales organization. Customer belongs to any sales organization, right? If we have created this customer into any sales organization, system should charge this amount. We can have other condition also. If our delivering plant is this, if this customer is purchasing this material, then system should charge this amount. What are these? These are the various conditions. These conditions are nothing but we call them as a table. But when you are going to create a table, so let's say I say, hey, please create one table by taking the combination of sales organization, customer, and material. So if you do not know where I need to pick sales organization, customer, and material, you cannot maintain this condition. So for that purpose only we are using this field catalog. So this field catalog will consist of all the values, all the fields which we need in order to define condition tables. So that is the reason it is the very first system. Now one thing, please remember, probably it will take some time for you to understand, probably in another 10-15 minutes you'll understand, but these are the various conditions. So if you work for any project, they will be using various conditions, different conditions, right? But which condition we don't know. Neither I know nor you know. Then who knows? Client knows. So when we are going to define this, client has to confirm that yes, we want system to determine price by using so and so conditions. We want system to calculate price based on so and so condition. So and so condition is what? Different values. For that purpose only we need to maintain these values. So whatever values we are maintaining here, these are nothing but table. This is the second step, condition tables.
But if you want to maintain, if you want to create a condition table, you must have these three values, right? You must have sales or customer material. You should have event plan. It means we should have a template or catalog where all these values should be available. Sales organization, customer, material, plant, this, blah, blah, blah. All possible conditions must be maintained, and that is the reason. First, this is the first step, that put the fields you need into the field catalog, right? So let's go into the system to understand. Yeah. So let's check in this system how to configure. Now, first of all, so we have transaction code for all the steps. Before going into transaction code, let me show you the path. We'll go to SPRO, then sales and distribution, basic functions. One thing please you all remember, under basic functions, whatever steps we are going to configure, most of the topics need condition technique. मतलब कि कंडीशन टेक्निक जहां जहां भी यूज होगा, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन बेसिक सेटिंग्स में, और कहीं भी अवेलेबल नहीं। हम कोई हर जगह काम करें, यहाँ भी हम लास्ट टाइम व्हेन वी डिफाइंड सेल्स डॉक्यूमेंट वी वर्क अंडर सेल्स, when we will be working billing we need to work in this, so we need to work in different node, but most of the topic आपको basic settings में मिल जाएगा. Now let's go to basic settings. Here you all can see pricing, free goods, account assignment, availability check, output control, material determination, listing exclusion. कम से कम इतना तो आपका कंडीशन टेक्निक के बेस पर है ही. So you must know the condition technique steps. Now, so we are discussing pricing, basic settings, pricing. Let's open this node. Then pricing control. And you see, these are the 5 steps. Define condition tables, define condition types, define access sequence, define and assign pricing procedure. You leave this. You leave this. लास्ट टाइम हमने बोला था ना कि या तो आपको 9 स्टेप्स याद रखना पड़ेगा या तो 5 स्टेप्स. अगर आप 5 स्टेप्स याद करोगे सो यू विल ऑलवेज बी इन कंफ्यूजन जब तक कि आपको अच्छा प्रैक्टिस ना हो जाए. व्हाई? बिकॉज इफ यू विल हैव गुड प्रैक्टिस यू विल बी नोइंग कि ये पर्टिकुलर स्टेप्स कहाँ पर है. व्हाई? बिकॉज जैसे हम लेट्स गो टू डिफाइन कंडीशन टेबल. अगर इसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखो फील्ड कैटलॉग है, दिस इज फील्ड कैटलॉग, और ये कंडीशन टेबल. मतलब क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इफ वी आर गोइंग इनटू डिफाइन कंडीशन टेबल, हमारे जो 2 स्टेप्स है इट विल बी कवर्ड दिस 2 स्टेप्स, राइट? फिर उसके बाद है एक्सेस सीक्वेंस. नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स इज एक्सेस सीक्वेंस. यहाँ पे आपका एक्सेस सीक्वेंस एंड देन डिफाइन कंडीशन टाइप्स. पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक दूसरे को असाइन करते हैं. जैसे कि अभी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में वी हैव डिफाइंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कोड, प्लांट. फिर हम लोगों ने एक दूसरे को असाइन किया, राइट? वी जस्ट मेड अ रिलेशनशिप बिटवीन दोस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट. वैसे यहाँ पर भी हमको करना है. अगर आप उसको 5 स्टेप्स को याद रखोगे सो यू कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, करे यार आर वी असाइनिंग कंडीशन टेबल टू एक्सेस सीक्वेंस और एक्सेस सीक्वेंस टू कंडीशन टेबल. एंड रिमेंबर वन थिंग, एसएपी जॉब के लिए आप जब जाते हो तो हियर वर्डिंग्स मैटर्स अ लॉट. वर्डिंग मैटर्स अ लॉट. अगर आपने वर्डिंग गलत कर दिया उस इन मेनी केसेस मीनिंग विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. इसे आपको अच्छे से रिमेंबर होना चाहिए. Now coming to the first step, put the fields you will need into the field catalog. It means what? First step says हमारे पास एक field catalog होना चाहिए जिसमें सारे fields available हों. If any field is not available, then only we need to put. What does it mean? It means ये mandatory नहीं है, बट बहुत सारा ऐसा केसेस आएगा कि आप जो क्लाइंट आपको बोलेगा कि टेक दिस कॉम्बिनेशन, पर वो कॉम्बिनेशन उसमें मेंटेन ही नहीं रहेगी, इट विल नॉट बी अवेलेबल. तो आपको उसको विद द हेल्प ऑफ अबेपर हम उसको अपडेट करते हैं. वी विल पुट. सो द फर्स्ट स्टेप इज फील्ड कैटलॉग वेयर. सो लेट्स गो टू डिफाइन कंडीशन टेबल्स. नाउ यू सी कंडीशंस अलाउड fields. Double click this. Caution, the table is cross client. Make a note. I'll explain you what does it mean.
You see here total 205 entries. ये सब क्या है? These are various fields जो हम अभी कंडीशन बनाए थे ना कि बेस्ड ऑन प्लांट्स, कस्टमर, मटेरियल, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. आपको सब कुछ मिल जाएगा. और अगर if you are not getting something which client is asking for, then only we will put those fields into the field catalog. That is the reason it says that put the fields. Abhi, let's say client says that create a condition table with the combination of material origin, material usage, tax code. As an example, I'm saying, right? Client has confirmed that we should have a one condition based on material origin, material usage, material group 1. Now these fields are available already in the field catalog. So why we will put again? System allow भी नहीं करेगा, बोलेगा already वो field exist करता है, right? So that is the reason first step says that put the fields into the field catalog you will need. But your main steps of condition technique start with second. Create the condition tables you will need. और what is condition table? This is the condition table. ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये सब condition table रहेगा. So what is condition table? So for the condition table, transaction code is V/03. V/03 to create the condition table, or V/04 to change the condition table, or V/05 to display the condition tables. But what is condition table? You yourself can answer what is condition table. So condition table contains the key fields for maintaining the condition record for a condition type, right? Condition table contains the key fields with the help of which we will maintain the condition record for a condition type. मतलब क्या है? हमने बोला कि जितना सारा कंडीशन टाइप है सबका वैल्यू अलग अलग होगा, डेफिनेटली अलग अलग होगा, राइट? बेस प्राइस, सेलिंग प्राइस PR00, तो PR00 तो केवल सेलिंग प्राइस का अमाउंट होगा, राइट? डिस्काउंट हम देना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं, इतना परसेंट देना चाहते हैं, या इतना लेट्स से करेंसी, मतलब व्हाट आई कैन से, इतना वैल्यूज में देना चाहते हैं. सो सारे जितना भी जो कंडीशन टाइप हम यूज करते हैं सबका वैल्यू हमको मेंटेन करना पड़ेगा. अब इसका वैल्यू हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे अगर ये सारे कंडीशन मेंटेन रहेंगे तब. दैट इज द रीजन condition table is nothing but condition table contains the key fields with the help of which we maintain the condition record for a condition type. Now depends on the requirement, we can take any field into the condition table as a selection criteria, right? And based on which the pricing will be determined. So let's understand how. So we will go to transaction code V/03, or you go here, create condition tables, double click. Now tables, अब हम यहाँ पे टेबल डिफाइन करेंगे, राइट? बट बिफोर डिफाइनिंग द टेबल यू गो टू F4. ये इसको हम जो बोलते हैं दिस आई कैन नथिंग बट F4 से आप डिस्प्ले कर सकते हो, विच कंटेन्स ड्रॉप डाउन लिस्ट. मतलब इसमें बहुत सारे वैल्यूज ऑलरेडी अवेलेबल है. लेट्स सी, ठीक है? So we can see that total 390 entries are there. And आप ये just observe what are these? These are tables 002, 004, 005, 006, right? 256, 259, blah blah, 600, 700, 800, 900. That's all. Correct? Let's do one thing. Try to enter 4 digits here. Let's say 1 2 3 4. See, हमारे यहाँ पे स्पेस ही नहीं है. What does it mean? It means maximum we can maintain 999 tables maximum. अब हमको टेबल क्रिएट करना है. रिमेंबर, क्लाइंट ये बोलता है कि हमारा एक टेबल होना चाहिए बेस्ड ऑन कस्टमर एंड मटेरियल. फर्स्ट टेबल शुड बी बेस्ड ऑन कस्टमर एंड मटेरियल. और एक बोलता है ओनली मटेरियल.
ओनली मटेरियल मतलब कि कोई भी परचेज करता है इस कस्टमर को छोड़कर, जो भी कस्टमर यहाँ पे है उसको छोड़कर, अगर इफ एनीवन इज परचेजिंग दिस मटेरियल, सिस्टम शुड चार्ज 1400 रुपीज। क्लाइंट ने बोला कि हमको ये लेना है, ये लेना है, बस ऐसा होगा नहीं। जस्ट आई एम मेकिंग इट सो सिंपल। Client confirm that they will be taking these two tables, they will be using these two conditions. एसएपी ने खुद भी कुछ स्टैंडर्ड टेबल डिफाइन किए हुए हैं। सो इफ स्टैंडर्ड टेबल में these condition tables are defined, it's good suggestion कि हम लोग उसको ही यूज कर सकते हैं, बट आप चाहो तो मेंटेन भी कर सकते हैं। If you wish, you can maintain your own with by taking same combination. पर सेम कॉम्बिनेशन अगर उसमें टेबल मेंटेन है, देन व्हाई वी आर गोइंग टू मेंटेन। पर मेंटेन कैसे करेंगे, दैट इज द मेन पॉइंट, राइट? सो प्लीज रिमेंबर, जैसा कि वी अंडरस्टूड टोटल वी कैन मेंटेन 999 टेबल्स, बट इन 999 टेबल्स अप टू 500 टेबल्स, अप टू 500 स्टार्टिंग फ्रॉम वन से लेके 1 2 3 4 अप टू 500, दैट इज रिजर्व फॉर एसएपी। मतलब क्या है कि अगर आपको टेबल डिफाइन करना है, यू नीड टू टेक एनी नंबर आफ्टर 500 बिफोर बिफोर 1000 अप टू 999, right? So from 501 to 999 is user specific, but from 1 to 500 is reserved for SAP. Let me show you. I'm just going to enter, let's say 145. What is it? Enter a table between 501 and 999. क्यों बोल रहा है? क्योंकि सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करेगा, वो जो नंबर वो एसएपी के लिए रिजर्व है, वो कोई भी नहीं यूज कर सकता। इवन आप क्लाइंट के लिए भी काम करोगे, वी कैन नॉट, बिकॉज वो जो 500 तक नंबर है दैट इज रिजर्व फॉर एसएपी। सो हमें जो भी टेबल बनाना पड़ेगा वो हम बनाएंगे फ्रॉम 501 टू 999। ठीक है, लेट्स मेंटेन एनी नंबर एनी टेबल, लेट्स से 560। अगर इस टेबल नंबर का ऑलरेडी मेंटेन है तभी सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। से इंटर, एंड टेबल 560 ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको वैसा टेबल लेना पड़ेगा जो कि अवेलेबल नहीं। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल 602 656, क्या है सब कुछ अवेलेबल है। 701, ये क्या, लेट्स चेक है। टोटल 319 इंचेस तो है, 21 22 72। Let's maintain 672, which is not available, right? So 672. Oh my goodness, how come it's not available, right? 672. Say 671, then 677. कुछ तो प्रॉब्लम है सिस्टम में, we have some issue। 2 3 4 5 705। चलो एटलीस्ट 705 सिस्टम में अलाउ किया। नाउ यू सी हियर फील्ड कैटलॉग, अकाउंटिंग इंडिकेटर, एक्टिविटी कोड, ये सारे फील्ड कैटलॉग। अभी हमको नीचे जाना है, we need to go to the bottom। Let's say we are going to maintain condition table with condition with the combination of sales organization plus customer plus material। तो सबसे पहले, अच्छा एक और चीज है, क्लाइंट ने ये बोला कि हमें जो टेबल बनाना है दैट शुड बी बेस्ड ऑन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, देन कस्टमर एंड देन मटेरियल। या तो आप ऐसे ले लीजिए, क्लाइंट है कंफर्म कि हमारा टेबल होना चाहिए विद कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल प्लस प्लस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन प्लस कस्टमर। क्लाइंट टेबल बोला, तब जब क्लाइंट जो भी कॉम्बिनेशन बोलता है ना, वी शुड नेवर यूज ब्लाइंडली कि क्लाइंट ऐसा बोला ऐसा मेंटेन कर दे, उसका एक रूल होता है।
और रूल ये होता है कि हमेशा हम सबसे पहले बड़े ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं। वी कीप फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट सीक्वेंस। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन तीनों में हायरार्की कौन बड़ा है, मटेरियल, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर, डेफिनेटली वी ऑल नो दैट दिस इज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि भाई कस्टमर और मटेरियल तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में ही रहेगा, तो आपको सबसे पहले आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन प्लस देन कस्टमर और मटेरियल में कौन बड़ा है, डेफिनेटली कस्टमर, क्योंकि मटेरियल हम कस्टमर के लिए ही बनाते हैं, राइट? सो इट शुड बी कस्टमर। एंड then finally we will have material. Uh, then we will have material. So this should be the combination always. This should be the combination. हमेशा हम we must follow this hierarchy from top to bottom, right? So let's say हमें ये condition maintain करना है. So first we need sales organization. जो पहले हमको लेना है वो हम पहले select करेंगे. Now I'm just using my mouse, but system is not taking it down. अब कैसे नीचे हम जाएंगे, हाउ कैन वी सी अदर वैल्यूज अदर फील्ड्स, बिकॉज सी यहाँ पर तो केवल सी तक की वैल्यूज है, डी ई अप टू जेड नहीं है कुछ, राइट? सो फ्रॉम आवर कीबोर्ड वी नीड टू यूज पेज अप एंड पेज डाउन. As of now I'm going to use page down. You see, system will show everything, correct? System is showing everything. I'm just using page down. So first we'll select sales organization, S, sales reason, sales organization. So table number 705, this is blank. How can we take it? Double click this. It will be added here. See, it is added. Sales organization plus customer. Now we need to go to the top. Again page up. We need to go to C. Customer. Double click it. Sales organization, customer. And then material. M. Page down. Material. Double click. Right? So we will take the required combination. And then go to select fields. Oh, sorry. Go to technical view. Here it will show you the technical name. Sales organization का technical name है VKORG. Customer का है KUNNR and material का है MATNR. अब हमें condition record अगर maintain करना होता तो how can we maintain? Please make a note. Transaction code is VK11. Condition record means कौन सा step? Last step. Condition record. तो जब भी हमको condition record maintain करना होता है, so what is condition record? Condition master data, right? So we are using transaction code VK11 always. सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि किस कंडीशन टाइप, कौन से which condition type you want to maintain value. I say for PR00, we use PR00. Now you see key combination. हम जितना भी कंडीशन मेंटेन किए रहेंगे, right? System will show in this list. As of now, system is taking sales org plus customer plus material. Okay, पर आप प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज आप ऐसा मत समझना कि हम क्योंकि हमने भी यही कंडीशन लिया है इसलिए सिस्टम दिखा रहा है, नहीं, बिकॉज समन इज ऑलरेडी क्रिएटेड, क्योंकि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, राइट? वी जस्ट डिफाइंड कंडीशन टेबल. जब तक हम असाइन नहीं करेंगे सिस्टम नॉट डिस्प्ले. ओके, नाउ जितना सारा रहेगा ना सब कुछ यहाँ पे सिस्टम दिखेगा. नाउ जस्ट से चूज और कंटिन्यू. यहाँ पे हम वैल्यू मेंटेन करते हैं. प्राइस कैसे मेंटेन करते हैं? Sales, what is our sales organization? We'll give here. Let's say we are giving 3579. What is our, who is our customer? Customer का वैल्यू यहाँ पे देंगे. मटेरियल कौन सा है? ये मटेरियल है, उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए. ठीक है? That is how we are maintaining the value कि ये कस्टमर इस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में है और अगर if is purchasing this material, system will charge 1000 per unit. पर यूनिट सिस्टम विल चार्ज. तो यहाँ पे आप देखो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर ऊपर है, फुटर में, हेडर में है, और मटेरियल नीचे है. इंटरव्यू क्वेश्चन, दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चन. इन इंटरव्यू दे आस्क क्वेश्चन कि विल बी मेंटेन कंडीशन रिकॉर्ड, some fields will be at bottom
and some fields will be at header level. Where is the control? Control is here. यहाँ पे ये तो सबका इंडिकेटर एक्टिवेट रहेगा, बट फूटर जो भी एक्टिवेट रहेगा दिस वो आपका नीचे चला जाएगा एट बॉटम, वी कैन सी एट द आइटम लेवल। और जिसका जिसका जो है ये टेक्स्ट फील्ड मेंटेन रहेगा, सो टेक्स्ट फील्ड एनीवे दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट यू सी द की the key will be maintained, so this is required in the condition record, but whatever field we need at the footer level we must activate it. If it is checked, then it will come at the footer level. If it is not checked, this will be available at the header. Okay, this is one interview question. Second interview question is, they ask that when we maintain condition table, there is one checkbox that is with validity period. आप देखो यहाँ पे with validity period वो automatic check है. You can uncheck also. But what is the purpose of this validity period? विथ वैलिडिटी पीरियड कहने का मतलब ये होता है ना कि फॉर एवरी जो भी हम प्राइस मेंटेन करते हैं, आप खुद सोचो कि हमने जो प्राइस रखा है क्या ये लाइफ टाइम का प्राइस है? नहीं, हमने डिसाइड कर लिया है कि चलो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर हम लोग 1000 प्राइस रखेंगे, राइट? पर ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर हम जनरली 1000 रख दिए कि चलो भी 1000 है, कल को अगर आपका कॉस्ट इंक्रीज हो गया, राइट, आपका जो कंपोनेंट्स वो सब इंक्रीज हो गया, उसका कॉस्ट इंक्रीज हो गया, तो आपको इसका भी दाम बढ़ाना पड़ेगा। यू नीड टू मेक इट 1200। कहने क्या मतलब है कि हर प्राइस का एक वैलिडिटी होता है, करेक्ट? या तो आप सिस्टम मेंटेन कर दो कि भाई 1200 विल बी वैलिड फ्रॉम 1st ऑफ अगस्त टू 31st ऑफ अगस्त, सिंपल। सो वो कैसे मेंटेन होता है? वी कैन मेंटेन, यू सी, वैलिड फ्रॉम वैलिडिटी। अगर आप यहाँ दे दोगे ये 1 अगस्त से 31 अगस्त आप अगर दे दोगे तो इस मटेरियल का ये प्राइस बस तब तक ही अवेलेबल रहेगा, उसके बाद अवेलेबल नहीं है। गॉट इट? सो ये जो कॉलम है वो कहाँ से आ रहा है? दिस कॉलम इज कमिंग बिकॉज ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन विथ वैलिडिटी पीरियड, एंड देन यू जस्ट click on generate table. Okay, table 617 is already defined with the same fields. That is what I was telling you कि अगर same field का अगर already maintain है, so no need to maintain, we can use the same, but no problem, I just want to show you all, so let's maintain. So this is warning, yellow है, warning message, just we can ignore, say enter. Do you want to generate the condition table? Say yes. Here system is asking the package. System is asking package. What is package? This is something, this package number will be given by your technical consultant basis. Basis will give you. Because the table is cross client. What is cross client? That will understand. यहाँ पे package अगर हम if we want to move the same condition table to other system, अब आप probably you will have a question here कि other system क्या होता है? तो something is called as a SAP landscape. वो लोग sometimes हम लोग real time में will discuss. So package number हमको देना पड़ता है. This package number will be given by basis team. पर यहाँ पर भी कोई basis team है ही नहीं, तो फिर हम कैसे सेव कर पाएंगे? So we can save in local object. अगर हमने लोकल ऑब्जेक्ट में सेव कर दिया तो ये जो टेबल होगा ये इसमें इस सिस्टम में ही होगा, दूसरे टेबल में ट्रांसफर नहीं होता है। दिस इज द मेन पर्पस, सो दैट विल डिस्कस। नाउ यू सी हियर टेबल A705 हैज बीन सेव्ड। हमने टेबल क्रिएट किया था 705 पर सिस्टम ने ऑटोमेटिक ए ऐड कर दिया, ठीक है? तो दिस इज अगेन स्टैंडर्ड सिस्टम बिहेवियर कि जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम उसके टेबल पे पहले ए अपडेट कर देता है, एंड दिस इज ग्रीन, मतलब देयर इज नो एनी एरर, इट मींस दिस टेबल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग द टेबल। अंडरस्टूड एवरीवन? Sir, 805, what means that one? ये मैसेज नंबर है, ये मैसेज एसएपी का मैसेज नंबर है। अच्छा, ओके सर। फॉर सिस्टम इंटरनल पर्पस।
पर हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब इससे। ठीक है, तो टेबल जनरेट हो गया। अब आप टेबल को चेंज करना चाहते हो या देखना चाहते हो, सो यू कैन यूज ट्रांजेक्शन कोड V/04 और V/05। अभी हम लोग कौन सा टेबल यूज करेंगे? हम लोग स्टैंडर्ड टेबल यूज करेंगे। वी विल बी यूजिंग दिस वन, कस्टमर मटेरियल और मटेरियल, ये दो कंडीशन टेबल यूज करेंगे। और अभी आप ऑब्जर्व करो, जब हम लोग कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, सिस्टम इज नॉट शोइंग इन दिस की कंप्लीट, सिस्टम को दिखाना चाहिए पर दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? दैट विल डिस्कस। क्योंकि ये स्टैंडर्ड है PR00, इट इज स्टैंडर्ड, इट इज नॉट कस्टमाइज्ड, नॉट क्लाइंट स्पेसिफिक। तो एसएपी ने जो कुछ भी कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, सिस्टम शुड डिस्प्ले हियर, पर वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। सो which table we will be using? We will be using, let me show you here, go back. We will be using table number 005, customer plus material and material 004। ये दो टेबल हम लोग मेंटेन करेंगे। सो आपको समझ में भी आएगा कि कैसे मेंटेन करते हैं। कैसे हमने देख लिया, पर वाई सिस्टम इसमें नहीं दिखा रहा है इन कंडीशन टेबल्स, तो वो चीजें दैट यू विल आल्सो अंडरस्टैंड। So this is how we are maintaining, we are creating condition tables. This is the first step, the second step. Okay. Now create the access sequence. Access sequence is very, very important. Let's discuss this topic tomorrow because today I cannot complete and I do not want to explain just 10, 20, 30%. Okay, so let's discuss from this step on tomorrow.